Okay, now it's starting. Nice. Let's confirm it. It start. Today I'm late, but fine, no problem. Oh, there is two going on. Nice. I don't know how I can, change the thumbnail of the short one, and I don't think I need to change this one because no one cares. Okay, so I only need to fix the this one, the horizontal one, yeah. Okay, let's do this quickly. Mhm. Okay, so now it is visible. Okay, let's see if I chat here. Hello, welcome. Okay, let's see how much time it will take to, appear in my chat, appear in my display in my OBS, because it's take too much time to be appear here. I don't know why, because my stream is so much what, so much. Oh, it's here. Oh, it's here. It's here. Okay, 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 okay. Hello, 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 hello. Okay. Oh, hi, Blaezy. Hi, I'm good. Welcome in, bro. Welcome in. Okay. Pretty much message came here fast, but to appear on the screen, it's take little bit of time. But yeah, it is there. Okay. So yeah, good work, nice. So okay, 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 okay. I have so many tabs open right now. So I'm still need to do something. Okay, okay. Okay, let me just open the screen. You should be. I can show you. I have no problem. Okay. Okay, so the screen is on right now, so you can see. Okay, so this is the whiteboard I am using. Actually, it's blackboard. Okay. So last stream we learned about the lesson 15. I gap one day. I have some, bad day going on. So no worries. So today we need to do the exercise 15 because we have already done the 12 exercise, 13 and 14 also. And this is some code. Okay, never mind. So let's just open the 15. I haven't created this, so I will just create right now. Okay, so bear with me.
This is exercise 14 and here are the exercise 15 questions. Okay, so I'm going to just put one by one. Image does not contain scene. What? Oh my god. Wait a second. Something is happening. What? Error image does not contain scene. What? Wait. Okay. What if I open the previous one? Does it say the same thing? Oh, image does not contain scene. Does not contain scene. What? Um, does it related to the obvious? Like, what is happening? Okay, let's try this thing. Like, what is going on? It's here, it's here. Never mind. It's working, it's working. Okay, let me just pull all of the image so that we can see easily and clearly. Nice. Second is the third one. Oh, Control Z. Mm, and that's it. Little bit bigger. Okay, that's it. This is the third one. Fourth. And this is the fourth one. Now the fifth. It is getting bigger, but no problem. We will tackle all of the questions. Okay. And the last one, the six. And this is going to be right. Okay, nice. We have done all the questions right now. So let's zoom in so that we can see clearly. Okay. Okay. This is good. Okay, okay, nice. And let's give the laser hour. Okay. Everything is working fine. So let's jump to the VS. Here is my VS. And I have done so many things, okay, because I'm learning steps. Um, Let me just close all these files, okay, and let me see my Git because I don't want to be, overwrite some files. Okay, I'm clean. My working tree is clean. Okay, so now from here I can start some new work, and before starting new work, I have 7 commits. Let me see. I have 7 commits. I should push this. I should because I don't want so many commits to be, stored in my local. And these are all good commits. There are no buggy one. So this should be clean, properly clean with no. Okay, so our origin has been changed. So if I see our origin must be at the top. Okay, origin and the main. Our head and the origin are at the same location. Nice. Okay, so let's just start some questions. Okay, today. So this is the first question we are tackling, 15A. What is saying? Using day JS, get a date 5 days after today and display it in the format this. Okay, so basically, last stream, if you didn't watch, I have learned the libraries in the last stream. Okay, so I know little bit how to use some external libraries that I can get from the internet. Okay, we have learned the day JS libraries, so we are going to test it. So basically, these are some libraries that we are going to use it. Okay, so let's go into some exercise. I know I have not created the exercise 14 because there are reasons because the exercise 14 all questions are related to this projects, okay,
and I don't want to be to create a different another copy of the file, so I just merge all the questions into the main one so that I have no problem. So, creating again and again that thing. That's why I merged it. So that's why there are no files for lesson 14. But I'm going to create lesson 15 because there are some other files that are not related to the projects that are for only exercise purpose. Okay, that are these questions that are only for the exercise, that this is not the actual part of the project. So I'm going to create some files here. Okay, so let's oh, I renamed it. Okay, I have renamed it 14. I should rename to 15. Okay, this is fine. Okay, and actually this is also wrong. This should be 15A. Okay, nice. Okay, everything is good. So let's start the question. I should read again, and you should also, if anyone watching this. Um, okay, if you get a question and you want to solve it, or you want to, understand the question, just read it twice, maybe three times, or it doesn't need, you know, to just read it once and let's go for the solution. No, just wait, understand the problem first. Okay, basic understanding is the key. If you don't understand the problem, you cannot find the solution. So first step is understand the question, okay, properly. So basically, the 15A question is saying we have to use this day.js library and get the date after 5 days from today. Okay, today is what? Today is 23 December. Okay, so we have to display the format in this format. Okay, display the date in this format. Sorry. So okay, so let's just import the file. Import. What should I import? Okay, day.js from here. Day. Wait a second. To import it, I need the library. So let's just search day.js e. What's the ECL? No, npm. It's just the npm. Npm no. ESM. Oh yes, ESM version. I need the ESM version. Yeah. Okay. Get the latest version at the day. Just deliver package. npm day.js. I am cool. Okay, so to get the folder, I mean to get the library, I need the script. Okay, but I want to import it. I don't want to run the script. Okay, ESM import npm installed import js from djs. I don't want to install it. Done. Okay, okay, fine. Okay. There is a problem whereas my lectures. Where is my lecture? Uh, Most of the time my lectures are at the front of the page, but where is my lecture right now? Oh, here it is. So basically, hmm, I thought that I could get the ESM version, but unfortunately I can't because if you look at the link here says super simple dev. That means this version has been created by super simple dev. Okay, that's why I'm not getting this. So basically I want this link. Okay, once I have the link, okay, I can come here and just import it
with any name, but DJS is fine because this is the actual name. Okay, and from, and I should paste the source, and this is the source. And now if I console it, console.log DJS, it should print. Okay, so let me okay, let's delete this terminal and create a new one. And if I run this node, oh, before running this file, I need to uh, redirect him because this directory is not correct. I am running this file in JavaScript, so I need to change the directory. So change the directory. Um, command is sorry, command is cd, and where I want to go in JavaScript, I want to go in exercises. Okay, exercises, and in exercises, I want to go in lesson 15. That's it. Okay, so from now you can see I am exercises. I am in right now exercises and in lesson 15. And if I just say ls, so it gonna list all the files that are in lesson 15. So if I click it, only there is one file, that is 15ajs, that is this file. Okay, so let's just run this file. So running this file, the command is node and file name 15a.js. And when I run this, there is an error. What's the error? Okay, internal module esm load 46, throw new error, error unsupported esm url scheme url supported scheme error unsupported esm url. Only URLs with a scheme in file or data are supported by the default ESM loader received protocol. Okay, there is having a problem. This is always happening with me, so this is nothing new. Okay, take a deep breath and let's think what is going on. This doesn't solve anything, but I am going to try it. Okay, I have imported this. Okay, let me just try to put in the brackets. What happened? If I put in this brackets, does it work? Make a space little bit. Thank you. Okay, still the same problem. Hmm. Okay, I need to go to the documentations. Sorry. This is what? Documentation. Thank you. Okay, installation. All code should work. My bad if you're having problems. But okay, there is a Node.js. Okay. To get started with JS in your Node.js project, simply add the dependency to your Node.js package manager. npm install Node.js or yarn, or I I have to install it. Oh, constant DJS is equal to require DJS import JS from DJS ES 2015, and then I can use it. Okay, okay, okay. Okay, let's just use this npm install Node.js. Oh, shit, I pasted in the wrong place. Okay, npm install JS. Okay, so it has installed the package, and I can see right there is a node module DJS. Um, and if I just run this file, does it work? Still doesn't work. And if I just remove this file, just let me comment it, and if I run this file, this should work. Still doesn't work. DJS is not defined. Okay, so use it. It says I have to do this. Okay, so if I do this, now this should work properly.
Oh, it's work. Function, extend function, local, stages, Unix. Okay. So basically, it has so many things. Okay, I will tell you what I have to do. Okay. So I have to do this to get this. Ah. Okay, no problem. I will just run it because I don't need it for too long. We are just going to just do our problem and just move on. Okay. So we have to add 5 days. Okay. Let's make a const new, sorry, today equal dayjs. Okay. So basically const new date equal to, this is the plus 5 days. Okay. So today dot add, and this is going to add 5 days, 5 day, and let's just, okay, before doing this I should also make this const um, new date format equal new date dot format, and this should format in, first I need month. Okay, first we need month, and this is a full month, day of the month. Okay, so full month, 1 2 3 4 4 capital M, and we need day of the month. So this is day, the D. Okay, full day. That's it. Okay, and now let's console this new date format. Okay, let's run in the terminal. Um, Here, and again the same problem because it is saying, uh, I should remove this. I mean, comment this out because I don't want this to be print. Okay, new date, today dot add, type error. Today date is not a function. At object, anonymous coding date. Um, why? Why this is not a function? Today, const new date today. Today is not defined. Today is not defined. What do? Oh my God! I have to console. I mean, comment this one. So today dot add is not a function. Why? Does this will do the work? Oh, this will do the work. Okay, finally. So I am getting the result December Sunday. Okay, what is today? Today is December Tuesday. So after Tuesday, let's count this. Uh, I forget what is today. What is today? Today is Tuesday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, after 5 days, it will be the Sunday. Nice. I'm moving on to the next question. This is done. Next is calculate 1 month after today and display in the same format 15. Okay, this is the same thing. I just have to change it. I'm gonna control A C copy, and let's just create a. Okay, I should create beside here. Okay, this is a new folder. Remove this one. I should remove this one. Okay, now I have to increase 1 month to 1, and it should be month. Let's see. Oh, it's new again.
Okay, exercises, and we are in lesson 15, I guess. Yes, list. There are so many files. We want to run the 15b.js, and it should say the new month, January, that after this month. Okay, this is also done. Okay, next is day.js has a subtract method which subtract time from date. Calculate 1 month before today and display in the same format. Okay, so it has also subtract. So if I go here and subtract, use the subtract, this should, oh, I should haven't changed here. Okay, let's just copy it, create a new file, 15.c, paste here and change here to subtract. Okay, now let's run the folder. 15. Oh, oh, what is going on? 15c. C. C. Okay. 15c. November, Sunday. Okay. We have subtracted 1 month. Nice. It is also working. Next question 15a. Create a function is weekend date that takes day.js object and return whether the date is Saturday or Sunday. Hint, use solution from 15d. Test this function with a new different dates. Okay. Um, I have to create a function. Okay, is weekend date, and this will literally take the parameter date that takes day.js object. Okay, he will take totally day.js and return whether the date is Saturday or Sunday. Return whether the date is Saturday or Sunday. Okay, let's do this. Control A C copy and let's create a new file. 15. Wait a second. Uh, oh, I missed this one. 15D. My bad. My bad. My bad. That's what I'm saying. I have only 15C. This file should be 15d.js and 15D. 15D. Okay, my bad. My bad. Get a date from day.js and display it in this format. Day of the week. Okay. Day of the week or day of the month. What does it mean by both are the same? I'm right? Day of the month and day of the week. I think both are the same. The format should be Monday, Tuesdays, etc. Okay. Get the date from day.js and display it. Get a date. Get a date. I'm still confused, but okay, I will try. Whatever. Hmm. I have to get a date. Let me read some documentation. Is there anything? Add, subtract. Oh, there is get set function. What does get and set does? Seconds values new date. That's second. Okay. Um, if you're in UTC mode, they will map to the UTC element. Day of the week. Day of sorry, here is the day of the week. Okay. Accepts number from 0 to 6. Okay. 0 means Sunday, 6 means Saturday. Okay. If the range is exceeded, it will bubble up to the other weeks. Okay. Day.js
gets day of the current week. Okay, day 0, return the new day.js object. Ooh, day.js hashtag date is for the date of the month and day, okay, hashtag date and day.js hashtag day is for the day of the week. Hmm. Mm-mm-mm. So day of, oh, it's the date of the month and this is the day of the week. Okay. These are the different. Okay. Let's do some experiment. Okay, because we learned from experiment, so we should do that. So here, okay, rather than today, let's get another day, like not random date, but let's say day, not day. What should we name it? Let's say, what should we name it? Someday. Okay, I know this is too bad word. Okay, I'm literally bad at words. Okay, let's just give some day. So like I'm going to give it 4. So what should be 4? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So it should be Thursday. Let's see. So console.log someday. Let's see what we got. I know this is the whole object, but I want to see the D. This is the D. Nice. Okay. What did we get? Date. Here is the date. So the date is 1970. What? 1970? Oh my God. Month 0. This is date, I guess. This is the week. Week 4. I guess this is the week 4. Oh my God. 1970? I got the 1970. What? Wait, brother. You didn't tell me the correct here. Oh, my bad. I haven't added the day property. This is totally my bad. This is totally my bad. I should have checked this twice. So I have to add day. That is 0 to 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Get the day of the week. Returns number from 0 to Sunday. Okay. So I need 4. And let's see again. And this should be the 2025 12 25 um 25. Okay, 25 Thursday. Okay. Let's understand clearly, okay, what things are going on here. So basically I say that I want a day, okay, from this week, and that is 4th. So basically he counts from here. 0, 1, 2, 3. Oh, there is a Sunday. Oh, it is going a little bit weird, but understand this way, okay? Starting from here, 0, 1, 2, 3, 4. So it has given me the 4th date. But that means the 4th object, okay? The 4th day of the object. That is 25. Okay, that's what is going on. The date 25, 12, 2025. Now I understand. Okay. So basically, what does this say? Get a date. Okay, I get a date and display it in this format. Okay, I have to display this. This format should be okay. Okay, let's display this and I can remove this one. Const someday format. Okay, someday dot format
equal capital D. Sorry. Small d. That means the day, and I should console it. Console.log some date format, and this should work. Thursday. Nice. It should work. Okay, nice. This done. Let's move on to the new one. 15e. Okay. Create a function is weekend date that's take a day JS object and returns whether the date is Saturday or Sunday. Okay. So basically, let's just copy this one because we are going to use this one, and let's just create a new file 15e.js and paste these all things here. So basically, we are going to create a function. Okay, function. It will going to take a object that is day.js, and this is the property it will take. Um, should I have to write in this way? Because, bro, please keep up. I'm confused. Let me think. Okay, before I take any parameters, let's just create the function first. Okay. Oh, I haven't named the function yet. Is weekend. Is the spelling good? Okay, spelling is correct, right? Okay. If um oh, there is a date. Nice. If the date, if date, mm, 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 and which function should it be equal? Ah, if I want to compare it, how can I compare? So like, okay, what happen if I just remove this one? Okay, and console this thing. Nice. And let's add this so that we don't get error any. And oh, I'm running the wrong file. 15e. Okay, there is an error because I can't do this. Someday. Okay, what if I run this one? Okay, I get 2. Okay, I get 2. That means today it is. That means 0, 1, 2. That means 2. Okay. So if I have 0 or 6, yeah, if I have 0 or 6, so basically if I have what, like day function, okay, equal 0 or wrong button, okay, or 0 or date day 1 2 3 equal 6. This is the last one, that means Saturday. So either is this one. Let me console log. Okay. This is Sunday. Okay, let me remove this thing. Let's create a else if and paste this here. Console.log. This is Saturday. Okay, nice. So I just have to provide some
Okay. Is weekend. I have to provide the date. Okay. So if I provide today, let's see what happened today. Okay. And if nothing found, okay, there I should make this one also console so that I know this is running else. Okay. So here should be what should be here? Okay. This is not weekend day. That's it. Okay. Let's run this file. Okay. This is the two. This is not weekend day. Okay. What if I just, rather than add, let's add some after date here. So like 3 days. 3 days will be fine. 3 day. Okay. And let's send someday here. Okay. Also comment down this. So we also we only need the if else statement. This is not weekend. Okay. Okay. After 3 days, what should we? 1, 2, 3. Oh, this is Friday. I should have add 4. So this is going to be a weekend day. This is Saturday. Nice. And if I go one more, this is going to be a Sunday. This is Sunday. Nice. So basically it's working. So let's compare to the question because I think maybe I have some, wrong things going on. Create a function is weekend date that keeps day that takes day object and returns whether the date is Saturday or Sunday. Uh, there's this function with few different dates. I have tested this. Okay, okay, let's move on. Move is weekend into a separate file and use export default. Import this function in another file and run it. Oh, okay. So basically, I have to create a folder. Let's name it is weekend.js. Okay, and let's just control X here, control paste here. Sorry, control paste also here. Okay, I should remove this all files and let's export it. Export this one, and if I have only one function, I can go with ESM. And for ESM, mm, 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 export function, export function is weekend. I think I kind of forget. Let me just check this quickly. Export default. Oh, export default. Okay. I bet the export default. So that basically will let me, import it here. If I go here and create a 15f.js and try to import the file is weekend from this folder, it should let me do that. Okay, let me also just open this file so that I can get this one. Okay. Or does this
Uh, Let me check this one. Today equal day.js. Look at this. If I console log today, if this print, that means it is working, but if it gives me error, that means this is not working. So node 15f.js. Okay, this is giving me an error. It is not working. Trigger on caught exception. Module not found. Oh, this is the problem. Wait, what? Okay, let me remove this one. JS is not defined. Okay. Fine by me. Paste this thing and now this should work. Okay, nice. Okay, does this still give me error? Okay, it's still giving me the error. Why is this giving me the error? Is weekend from this folder. There is a folder. Um, what's the problem here, bro? Import is weekend from this file. Basically, this says just go into this folder, okay, and wait, what? Uh, this folder. Okay, so there is a folder. Where is the folder? There is. So basically, go in this folder. That means node lesson 15, and just check uh, .js. I forgot the .js. That is all the AI fault, not mine. Okay, it's still giving me the error that what is the required thing. Does this give me the error? This will say what is the JS. Huh. And why the required function is not working? File is a common JS module. It may be converted to an ES module to TS8001. What? And what what happened when I just use this link? This also doesn't work here. I don't know what's the problem. I just go, okay, import DJS from DJS. Just paste this link. Have this, run this, still the error. Why this is the error? Okay, if I remove this, does this work? Wait, what? What? This is working, but there is another error of this one, I guess. If I remove this, there is going to be no error. No, there is an error. Node module doesn't parse common JS. We parse in the module. If I remove this one, does it give me the error? Yeah, it is giving me the error. Terminate this warning at type module to the coding day area lesson 15 package JSON. Oh, package JSON. Oh.
Okay, 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 okay. It should be in commas. Type module. What is this? Node modules. Okay, I don't know about the JSON packages. I'm just going to call the AI for help. AI, help me add type module. Uh, he just said it like this. Uh, and when I try to do this, it gave me the error. Look at this. Type. Does it should be in the, oh, it also in the module, and this should work right now. If I go there, still warning. Why? Hmm. I have so many problems. Hmm. That's why I need HTML where I can put the script. But wait, I don't need scripts. Huh. Man, oh man, I'm having so much problem. Okay, I'm going to rename this with HTML. Okay, HTML and remove all these things. Let's generate this normally. HTML head body, inside the body add a script. Okay. Um. Okay. What if I don't add anything? No, I have to. I have to add this type module. And now if I go here, okay. If I import JS from this, oh my god, what the heck is this? From this link, okay. Paste it right there. Okay. Const today equal JS and console.log today. If this works, I'm going to cry like a hell, bro. Flashbacks. Failed to load the resources. Favicon icon. I don't know what this thing is. If I refresh it, it should be gone, and it is working. It is working, bro. It is working. Hmm. Do, 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 do. Boo, boo. Try to look at this folder. It's does this work? Okay, remove this thing. Is weekend and give it the today. Oh, I have removed this. My eyes. This is not weekend day. It is working, bro. Oh my god. Something I still didn't understand what is going on, but
Okay, so if I am trying to import only in JS, this is not working. But when I use the type module, it is working. But the type module to be work, it should be in the script. Okay, I am going to remove this one. I'm sorry. I'm sorry, I still didn't understand these things, so that's why I'm going to delete this. I'm going to delete this. Delete. Okay. Bye bye. Oh, there is still node module. What are you doing here? Just deleted by. Okay. Is this font in the different? Okay, nice. Okay, I'm moving to the next question. Move is weekend into a separate file. Use export default or export default. Oh, I should have read the question carefully. Another file run it. Okay, it's working. We can also rename a default export when we import a15f. When we import is weekend, change the name to something else like import it's set sun. Uses okay. This should work, I guess. It's it's sunset. It's sunset. Age is sunset. Is sunset. This should work. It is working. No problem at all. Okay, from this point, these are for the external libraries. Okay, from this point, we will improve the code into the final Amazon project. Okay, this is the final Amazon project. So I'm going to make a commit. Okay, remove this file, remove this file. Just go there. I have created so many folders. Just mm, um, exercises of libraries are done. Exercise of libraries are done. Okay. Okay. I have committed this. Okay. And from this now, I'm not going to be. Why this is blue? Huh? Why are you blue? Why are you blue, man? Why are you blue? What's going on? I have to delete this. Create a new terminal. Git status. Okay, there is one commit. Yeah. Okay, then why there is a blue icon on the exercise? I don't understand, but okay, fine by me. I don't need to see that thing. Okay, remove this file, remove this one, remove this one. I don't need that. Remove this one also. Okay, we don't need this one also, but we are going to keep that thing. Okay, from this point, we are going to work on the Amazon project that we are doing from the last week, working on that thing. Okay, so first question, 15, first question, 15H. When deleting a product from a cart, instead of using DOM and updating the page directly with delete, regenerate the HTML for the order summary. Okay, so let's jump to our files and let's just go to the checkout. Here's a checkout.js. Okay, there are two things, render order summary, render payment summary. Okay, so we need to go to the order summary. Okay, basically both are the same. Okay, here we need to go to the delete section. So let's go to the
delete. Okay, how many we have delete? Okay, here one, two. This is the delete HTML. Okay, okay, there is the delete link. So basically, we find it. So here there are the delete link element document.query. Okay, so what I am doing, okay, delete link, delete from cart, product ID, update display removed item. Okay, basically I have to look at this one and okay, here is the function. So basically what I am doing is I am removing from the document. Okay, so what happened? Okay, I have to see what happened when I just comment this out. Sorry, I have comment the wrong one. I have to comment this one. Yeah, comment this one. Okay, and let's just open the checkout page. This is the checkout page. Open the checkout page. Too bright, but fine. Okay, there is only one product. Let's add some products. One, two, three. Okay, so now there are some more products. Okay, nice. So this function, where does it go? In this here. Okay, this function, what it just remove the container that we click on the delete. Okay, basically, if I click on this button, this container, okay, basically this container will get removed from this space, and yeah, that's it. So I have commented this out, and basically I have already rendered the payment section, but I haven't rendered the this one, order summary, the full page one. So does this render the page? I don't think so, but let's check it out. 3, 2, 1, I'm clicking it. Okay, nothing is working. You can see there are lots of things changed. If you see, if I reload this page, there will no two slots of toaster. Okay. If you have seen, this price has been decreased because this is has been got deleted. It's got deleted in the back end of the data, but from the front it is not displaying the okay page. Okay, when I refresh it, it's gone. It's gone. So basically, I just have to render this thing again. So here is the where is the render? Um, where is the render? Okay, here is the render payment summary. So basically, Control C, and okay, here is the. I just have to render this, and that's it. I don't have to do this. And if this work, I can remove this function. We don't need them. Okay, so let's go refresh the page and let's check for any errors in the console. Okay, there are no any errors in our page. Okay, so when I click this, this will remove from this page, and the page will be refreshed by itself. Let's try it, and it is doing well. Okay, if I click this, there is nothing. Nice, it is working good. One, two, one, two. Okay, let's add some products. Okay, let's delete this. It will remove from here. Nice, it is working great. So we have done this part. We are now we are rendering the page. Okay, using not using DOM right now. Okay, next question 59. In the payment summary on the right, the number in the first line, okay, this is the line, item 3. Item 3 is supposed to show the cart quantity. However, this number is always 3. Replace this number with the actual cart quantity and make sure it updates whenever we change the cart. Okay, this is going to be a little bit of challenge, but not too much. Okay, okay. I want to see the next question because it's kind of related to this one. So let's see. We'll create the checkout header at the top using MVC. Okay, MVC. Create a new file. Create a new file. Checkout header.js in the checkout folder. Okay, in the checkout folder. Okay. Create a function render checkout header. Generate the HTML and display it
on the page, note, insert the correct card quantity into the HTML. Okay, this is the after part. Okay, 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 okay. Let's do this part. So basically, in this menu, there are total item three. Okay, let me add more products so that you can see there are total now 10 products. Okay, there are now total 10 products, but here are the in the order summary, item is still so the three. So we need to update this one. Okay, so let's move to the code. And where is the code? Here. So we have to go to the payment summary. In the payment summary, there is the three. Okay, so what we need here, we need cart quantity. So here is the cart. We have cart. Okay. Oh, we have cart. Wait a second. Before this, I want to jump in the order summary and I want to look for the top one, the middle one. Is the delivery date, container, product card, product image. Not this one. This. Why did it remove this one? Mm, oh, there is a middle section and checkout header middle section. Am I running this function here? Sorry, middle. Oh, there it is. There is document dot query selector. Wait a second. Update middle. Where is the? Oh my god. Delete render update display middle. And there is a function, and I have it here also. So basically, there is two lines, same things. So I should remove this, but okay, let me see what is going on. So basically, I am taking the function in HTML, calculate cart quantity. Oh, basically, I'm using this function, and where is this function coming from? Calculate cart quantity. Oh, basically, here is the cart quantity. Okay, now I get it. What's going on? Okay. So I should remove this because there is no use for this thing. Yeah, everything will be work fine, no problem. Let me just see. Wait, what? Wait, what? Oh. That was the default one. Oh, I understand what's that. Control C, control paste there. Let's make it a. Oh, my bad. How do I select this? Okay, nice. So basically, that function is the default one that show the items. Okay, so now if I just go to the, can I just open this one also, please? Okay, in the payment section, I need another that is calculate cart quantity, basically this function, and I just have to run here. And so there, control dollar calculate cart quantity, that's it. And I don't need to provide anything, and that's done. That's done. Let's see if I update some quantity. Does this work? 45. Oh, it does work. Look at this. It does work, bro. Look at this. It does work. Okay, this done. This part is done. Where 59 is done. The challenges are here, bro. This is going to be tough, but okay. We will create the checkout header at the top using MVC. Okay, for this part. Okay, create a new file, header checkout.header. Okay, let's create a new file.
What's the name? Checkout header.js. Okay. Where is the card? Sorry, check. Mm, checkout header.js. Okay. Checkout header.js. Nice. Checkout header. Okay. So basically, I have this folder. Create a function render checkout header. Okay. Render checkout header. Okay. Function render checkout render checkout header. Okay. Hmm. Generate the HTML and display it on the page. Note, insert the correct card quantity into the HTML. Okay. So I have to generate it rather than, so I have to go to the checkout section, because if you go there, there is the, is this one, I guess. Hmm. Oh, this one, I guess. This thing, checkout. Little bit confused. This is the middle section. Okay, there is only one div inside it. Okay, let me see the question again. Note, insert the correct card quantity into the HTML. No problem, this will work fine. A function render checkout header. Generate the HTML. Generate the HTML. So basically this all, yeah, basically this all thing, or only the item thing. Because if you look inside the order summary, let's go to the bottom where my function is update display middle. Okay, it is using the DOM. Okay. Hmm. So basically, this thing is just creating this thing. Okay, if I just copy this, Control C, okay, and where I'm going, come here, check out, take this class, okay, take this A or whatever it is, Control C, wait, and okay, if I take anything from inside this thing, okay, I should take all these things. Control C, Control X, and paste here. Let's create a function. Let's name middle header HTML equal blank. Um, okay. Const. I don't need to change too many times. Const haptic. Let's put it here. This thing, basically. So this should I create, and for the quantity, where is the quantity? Quantity is here.
Control C. Inside this one, inside the A, let's put it this here. Okay, now we enter. Okay. Um, okay, this should be so here. This go that way, this go that way. So basically, this is the value that we want, and this thing will be regenerated. Okay, and to get the value, I need to import um, calculate cart quantity from, okay, from where I need to get out. Okay, and I need to get out again. I need to go data. I need to go from there. I can get the cart quantity. Yeah, if I go here and if I have the cart quantity, where is the cart quantity? Update, calculate cart quantity. Okay, there it is. Nice. So basically, this is the thing. I need to render it out, and let's export it. Okay, let's export this one, and this is the single one, so I can export default using render checkout header. I don't need this, but I can do this, no problem. Okay, if I see the utils money thing, function change money, and if I look here, constant, oh, I'm not, okay, return middle, okay, return this thing. So basically, uh, to render here, I need to render here, sorry, um, here, here are the header quantity from Java JavaScript. So capital J. Okay. So basically, I have the render checkout HTML. So if I go to the order summary, I can import this one. Okay. Insert the correct quantity. After deleting a product from the cart, re-render the checkout header so the cart quantity is up to date. Note, use MVC instead of updating the page directly with DOM. Yeah, I got it, I got it. So first of all, I have to, does this thing is using render payment summary? Okay, what's the name? What's the name of this render checkout header? So render checkout header from where checkout and checkout header. Yeah, nice. So just go back. Okay, order summary. Oh, this is the order summary. Why I have go? Okay. Rather than I just go back like this way. Let me confirm this thing. If I just go, there is a header. Checkout header.js. Nice. Okay. To use it, Control C. Okay.
uh, uh, uh. Choose this. Come to this function, okay? Update display quantity in our HTML. Uh, uh, uh. Here, and I have the wrong one. I have to select this one. Checkout header middle section. Checkout header middle section. Checkout header middle section. JS middle cart quantity. What? Where is this thing? If I go here, there is no. Oh, I got it. There is the JS middle. I don't need this one now. Okay. So if I go here and just change this to render checkout header, basically that's it. That's it. Because this will return this thing. Okay. I've done something bad. Let me think. Let me think. Let me think. I am still using this thing. Um, Get a new function. Check out those folder. Create a function. Render. Okay. Generate the HTML and display it on the page. Display it on the page. Display it on the page. Um, am I getting it right? Because I feel like I'm not. Okay, so Control X. Okay, Control X. Take this thing and inside the function, um, should I return it? No, no, no. I shouldn't return this. Control V. This thing equal middle header HTML. I mean, is this the good? When this thing is still not looking good. Mm, It's already one document.query selector.js. Oh, this is the wrong file name. This. Oh my god, oh my god. The file name, I mean, this should be checkout header middle section. Checkout header middle section. Still. So basically, this function. Uh, Let me see some errors. I'm not getting it. Failed to load the resource server. Refresh. Okay. Let me just open it again. Okay. Now what's the problem? Failed to load resource. The server responded with a status of 404 not found.
What the thing are you not finding it, bro? JavaScript Amazon project data. If I click here, this is working good. There is 53 folders. Why this is not? There is having so many problem. This is still exist, okay? This is still exist. So basically, in order summary, I have import this one. Okay, let's just not do the default this thing. Okay, let's just do some normal because I don't know what's the problem. So if you don't know, just use the default things. Okay, this is fine. It's still the same problem. The problem is I'm not getting the exact problem. Like what's going on? What's the exact error? Like what can't you find? Okay. Hmm. Oh, shit. Oh, shit. What the hell? I was not expecting this. Oh my God. Damn, bro. Okay, fine. I'm good. Nothing to worry about, nothing to worry about, nothing to worry about, okay? Oh, shit. Holy shit. Okay, okay. I will. Nah, bro. Nah. I should disable it right now. I should. What? There is, no, there it is. I'm sorry, I have been facing so many problems that I don't want in my life. Um, okay, there is problem that my page is not loading and I don't understand what's the problem, okay? So, cite the payment because we are not working on this thing. What did I change here? I don't know. What did I change here? I don't have to change this money. Money is good. I have to change this thing. Okay. So now check out. Okay, this is checkout header. Okay, let's come to the bottom. This is the update display that is basically rendering this file. Okay. Before this one, okay, if I am rendering the check payment history, okay. So let me see. There is the payment. Does this function return it? No, this doesn't return. This also save the thing in the inner HTML in the payment HTML. Basically, okay. That's the same thing what I'm doing here in the checkout. So basically, I have created this one. Okay, I have pasted this here. Okay,
Um, Let me cross check the class again. Check out this thing. Control C. Okay. Control V. Okay. Now I understand the problem. If you go to the checkout section at the bottom, there is only one checkout that is loading the checkout page. Okay. So if we go to the checkout section, let's go to the checkout section. It is also loading two things, what? Render and this one. So it is not rendering the thing that are not import the render checkout header from checkout header.js. Nice. And also before, okay, this should be in the middle. Render checkout header. Okay, no, it should be at the bottom. Render checkout header. Okay, it's still not working. This should render checkout header. That means this one. Okay, control this. Check out if I go and paste this one. Basically, this is no problem at all. Checkout header.js. Checkout header.js. Okay, the files are also good. Okay, in checkout, this is also a type module. No problem. So this is good. Okay, what we have done in payment. Okay, I have import many things in payment, so I can import in the checkout header. Okay, so money, sorry, go. There is a function, okay, render payment, and this function is all, and inside this function, this all the things are going on. Okay, in checkout, this is the function, this is all, this is the export, there is also export. Under checkout, I am rendering this, and I am documenting query selector dot checkout header middle section. Okay, dot inner HTML. The same thing. Dot inner HTML. I can do this also. Dot inner HTML equal this thing, and this is basically this one. Okay. Nice. So basically, whenever I want to render this one, I just go in the old summary and reload this checkout.header, exactly this one. Okay, order summary, control C, and every time I do something, anything, every time I do anything, I just, you know, solve the problem. I mean, call the render display middle. So just change this to this thing, render checkout, and this thing, middle. So render checkout header. Is there any middle? There is a middle. Checkout, and there is. Okay, so I don't need this thing. Okay, nice. Is there anything? Query selector all. Event listener, click this. No, I don't need to do anything. Okay, now this should work perfectly. I don't know what's the problem right now. Get 127 cart script checkout. This is not getting the folder. Are you talking about this thing? Okay. Let me do the inspect again. Okay, this is the checkout page. Basically, it's running the this folder. Okay, this thing. So basically, if I go here and console.log
the render order. What the heck? Render order summary. Basically, it will give. Oh my god, is something. Okay. If I remove this one, no. Okay. Here, nope. After this one, nope. It's not working. Whatever I do. Um. Import, export. I have export this thing. Like exactly this thing. Okay. Export, export. I have done this. Export. I have done this. What's the problem right here? I don't understand. I'm also getting the right, you know, class. Payment summary. Okay, he's taking the payment summary. JS payment summary. Okay. He has created a new one. JS payment summary. Okay. If I just go there and create a new JS, check out header, middle, section. Okay, that's good. Copy this, come to the header, come here, paste this. Does this work? 'Cause that's what I can do in HTML. Middle is middle, and middle all is the this one. Check out and this thing, items, calculate items, payment summary. Checkouts. Check out. Check out. Oh my god. Oh my god. I don't think the problem is this one. The problem is something else. Okay. Problem is something else. Render checkout header. Render payment summary. Render checkout header. Render payment summary. I don't think this is a problem. Okay. I'm just going to look what's the actual problem. Okay. We're gonna find it, we're gonna solve it, no matter what. Basically, from this file, there is the error section, there is JS checkout, okay, and inside it, I removed all the things from inside. From this, I have changed this line. Nothing matters. Let's come to the checkout. Render checkout header. I have imported the rendered checkout header from the same location where all the files are. Okay, let me see. My files are still there. In the checkout section, there is the checkout header JS, if you can see. Okay, there is nothing to worry about it. Checkout header, this is a totally new file. Order summary. The main problem is in the order summary. Wait, what did I have changed uh, in the payment section? Calculate card quantity. Okay, this thing only. Okay, nothing extra. The main problem is in this folder. Enter checkout from dot checkout.
header.js. Everything is correct. Okay, no changes. Let's come where the changes are being made. Okay, here, display removed product item. Wait. Update display removed item. It is again. Update display remove item. Did I change this thing? Update display removed item. Okay. Order render some. Oh, now I get it. So when I remove this function, update display removed item, basically what it does, it remove the product by using DOM every time. But from this, I just rendered the whole page. Okay, when I when anyone click the delete link, okay, this is good. Update display middle. Okay, render checkout header. This is the default one. Nice. Okay, this is the render checkout header. Okay, update display middle. Render checkout header. Update display middle. Render checkout header. Okay, function update display middle. Okay, if I just you know remove this file, okay, two files, okay, two files. Okay, this thing I have to still do this render order summary. Okay, I have to put this thing. Okay, I'm going to discard these changes. Thank you, and just gonna remove it. Let's go to the summer and let's make the changes again. Okay, here's the removed item. So basically, I need to, what's the name of it? Render old order summary. Oh my god, I can't even read. So basically, like this. Okay, so this will just do the same, and let's go to the checkout section. Remove this thing also. Discard. So everything same. Checkout also remove this one. I will do the from the start. Okay. Checkout, nothing to worry. Remove, I have just changed this one. Nothing to worry. Still payment. Okay, I have this one. Okay. Just the quantity change, nothing else. If I go to the files, remove this one. Let's run the file. Oh, it is still going on, and everything should be fine. Okay, every files are still fine. If I delete anything, for example, this one, it will just gone. We can't even imagine. Okay, everything is working fine at this point. Okay, at this point, everything is working fine. Got it? So I have to just Control A, Control C. I'm going to copy this thing and I'm going to remove this file because I don't want in my new directory. Okay, so I'm just going to remove it. So basically, if I go to the changes, there are only the render thing, and this is the new quantity thing. Okay, I'm going to commit this thing. This will be the update the item in
payment and delete link with MBC commit. Nice, everything committed. Nice. And if I come here, everything is new. Okay, let's create a new folder called check checkout dot header header checkout dot header dot js. Click it, paste the whole things. Page is working fine, no problem at all. Okay, nice. So let's come here. Okay, and let's just take inside all the things. Okay. If I go in the question section, create a function and let's generate a and display it on the page. Okay. Okay. So if I go in the order summary, okay, when I there is look there is some problems. Okay, there is this one update middle 124. Okay, let me write this thing. Okay, so that I don't forget. Or I will just find it. I have no problem to finding it. There is the default one. Okay, there is another one, and there is going to be all the functions here. Okay, so let's just start removing some things. Okay, some things. First, let's just go to the basic page and where are the files? Okay, here. So I'm just typing it. Okay, some random numbers like 22 items. 22 item. Okay, that should display here. Okay, it will not. It will not. Okay. I got it. I got it. So I just have to go to the render summary, comment this out. Okay, and okay, display quantity. Comment this one out. Update display removed item. Okay, I have removed this one, so I should remove this one. Okay. Okay, let me think. There is the one. There is the default one. There is a two. There is the three, and there is no more. Okay. So if I visit the page, it will default show the 22 items. Still having no problem at all. Okay, I having no problem. Okay, now let's just use this. Okay, I wanted to run this. So let's just comment out this folder console.log and checkout.header. Okay. Okay. No. I can't do this from here. Do this from here. Console.log middle header HTML. That's it. Nice. Render. Checkout. Wait a second. Does this spelling mistake the whole time? Oh my god. I'm going to freaking it out. Bro, no way. There is a spelling mistake. R-E-N. Render. Ooh. Okay, render.
So if I want to run this page, I have to go in the JavaScript Ama- Amazon project inside scripts inside checkout list. There are three folders: night, node, checkout, header.js. Hmm. What is the error? Const error. Reference error. Calculate quantity is not defined. Oh, can calculate quantity is not defined. Okay. अब ये बोलेगा कि ओ माय गॉड कि कैलकुलेट क्वांटिटी क्या है ना? अब यही बोलेगा कि कैलकुलेट क्वांटिटी क्या है. Internal module runs when trigger uncaught exceptions. Module cannot module decoding JavaScript project Amazon.cart imported from. I don't know ये files को क्यों नहीं import कर पाता है यहाँ पे. I mean ये run नहीं कर पाता है. Node I don't know node क्यों नहीं run कर पाता है. Okay, let's just ask to GPT. What does it say? Um, this JS file and it can't run on terminal. Why? It gave error. Hmm. This is explain while running a file with Node.js and Node.js is actually telling you the solution already. It's written down clearly why this error happened if you are running a file with Node checkout.js. Node setting is a ES module and Node require file extension to readable import. You are importing this file, but your actual file is data card. Node does not auto open .js like browser and bundles do. ओ यहाँ पे कार्ट है. यहाँ पे कार्ट क्यों है भाई? डॉट जेएस हेलो. ये भी प्रॉब्लम था क्या स्टार्टिंग से? ओ माय गॉड भाई कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स आ रही है ना. मेरा दिमाग खराब हो रहा है. बट योर एक्चुअल फाइल. ओके. Node does not auto open JS like browser bundles too. That's why Node throws error module not found. Did you mean to import this file? To fix in this node, change the import to include the .js extensions. That's where second issue you will hit the next this code. Terminate query selector, check out header middle section. जो कि basically है created है नहीं है अभी currently. Let me see. इसको हटाओ. check out middle page कहाँ है? और ये रहा. तो यहाँ पे है ही नहीं. Let me create js check out header middle section. So if I select this one, it should also select this one. Nice, spelling सही है. So ये चीज JS checkout header middle section. JS checkout header middle section. Nice. Okay. Will not work in Node because the document only exists in the browser. Got it. Node has no DOM. So after fixing the import, Node will throw why to work in the browser. The file meant to be loaded by the HTML like this one. ओके. समझ गया. यहाँ पे तो रन नहीं करेगा तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे चलाने का. तो इस चीज़ को हटा देते हैं. ठीक है.
अब जो है इस चीज को मुझे चेकआउट में लेके चलना है। लेट्स गो। और मैं पूरा चीज खुद से लिखूंगा। अगर इसने कुछ भी किया ना, रेडर पेमेंट, भाई साहब ऊपर भी देखो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। ओ माय गॉड भाई, मैं इतनी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। स्लैश चेकआउट स्लैश चेकआउट हेडर डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेंडर की बजाय रेडर लिख रखा है। रेडर REN। ओ माय गॉड भाई, RE, अरे ये कहाँ है? चेकआउट REN रेंडर। और बाकी सब में इसमें क्या है? रेडर, इसमें भी रेडर ही है। ओ माय गॉड भाई। एंड रेंडर, भाई पेज वर्किंग है ना? अनकॉट रेफरेंस एरर, रेडर पेमेंट समरी इज नॉट डिफाइंड। जेएस पेज नंबर 6 पे, जेएस पेज नंबर 6 पे, किसमें? चेकआउट डॉट जेएस में पेज नंबर 6 पे। ओके, चेकआउट में REN। थैंक यू। और कोई एरर नहीं है? एरर नहीं है, नाइस। भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी करता हूँ मैं, आधी जिंदगी तो मेरी स्पेलिंग में ही निकल जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं रन कर सकता हूँ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे रन तो किया ही है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जाकर इस चीज़ को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मिडल HTML, तो ये रन कर देगा ना। आई मीन यहाँ पे दिखाना चाहिए मुझे, नाइस। यानी ये चीज़ तो वर्किंग है। 8 और ये चीज़ आ गया है। ओके ओके ओके, इस चीज़ को हटा दो। आइटम, सो ये 8 प्लस भी हटा दो, आई एम सॉरी, बस 8 आइटम। आइटम्स, आइटम्स था या आइटम था? अभी यहाँ पे तो होगा ही ना, यहाँ से भी तो मैंने हटा दिया था। तो हाँ, ऑर्डर समरी में होगा। यहाँ पे भी मैंने आइटम्स लिख रखा है। ओके, छोड़ो आइटम ही रहने दो, है ना? ओ हाँ, यहाँ से मिल जाएगा ना। आइटम्स है भाई, आइटम्स है। ओके, आइटम्स रखने दो। ठीक है, आइटम्स, नो प्रॉब्लम। चेकआउट में आइटम्स ही रहने दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यहाँ पे 8 आइटम्स विजिबल होगा, यहाँ पर भी 8 आइटम्स विजिबल होगा। नाइस, सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं इस चीज़ को फिलहाल के लिए कंसोल कर कंट्रोल वो कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब चलते हैं, मतलब अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है ना? यानी कि चेकआउट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे वो करने वाला हूँ, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट रेंडर चेकआउट फ्रॉम, मेरे को चेक करना है तो फ्रॉम डॉट पेमेंट समरी हेडर डॉट जेएस। ओके, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को कॉपी करूँगा, जहाँ जहाँ भी कमेंट्स हैं वहाँ वहाँ पे यूज करना है बेसिकली। बेसिकली ओके, इसके नीचे यूज करता हूँ यार, फिर दिक्कत हो जाएगा। इस चीज़ को कॉपी कर लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एंड या मुझे डिफ़ॉल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो हमारा वही कर दे रहा है, चेकआउट ही कर दे रहा है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे चेंज कर दिया। एक सेकेंड रुक जाओ, अपडेट यहाँ पे कर दिया, अपडेट मिडल के यहाँ पे कर दिया, और डेट्स इट।
Okay, okay, everything is working fine. Everything is working fine. So if I go there and update करते हैं 12 आइटम तो हर जगह 12 आइटम हो जाना चाहिए। याहू! क्या हो नहीं गया? क्या खाली छोड़ेगा? जीरो नहीं होता सेव। जीरो कोई क्वांटिटी होती है? हम्म दिमाग खराब हो गया, पता नहीं है क्या क्या फालतू की चीजें मैंने कर दी थी। ओके, तो अब मैं इन चीजों को हटा सकता हूँ। नाइस। अब मुझे बार बार जो है वो डोम यूज नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार डोम काफी है, वही सबको कर देगा। नाइस। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। रिफ्रेश, यहाँ यहाँ चलो, दो तीन और ऐड कर लो। वर्किंग। अगर मैंने इसको डिलीट किया तो ये अपडेट हो रहा है। नाइस। इसको डिलीट किया, अपडेट हो रहा है। नाइस। सब कुछ 10-10, प्राइजेस भी सब कुछ सही आ रहे हैं। शिपिंग कॉस्ट आने तो चाहिए। यप। दिस इज वर्किंग गुड। ठीक है। इतने सारे फाइल्स में चेंजेस हुए हैं, बताओ। इसमें ये, वेट अ सेकंड, अभी भी यहाँ पे यही है। इस डिफॉल्ट को हटा दो ना, अब तो इसके काम भी नहीं है, काम भी नहीं है। तो यहाँ पे डाल देते हैं मैसेज here are the header from JavaScript. ओके, सो ये चेंजेस हैं यहाँ पर। नाइस। चेकआउट में मैंने ये दो नए बना दिए हैं, 3 हो चुके हैं। हेडर में इस चीज़ को हटा दो, चलो काम नहीं है अब इसका। ऑर्डर समरी, ऑर्डर समरी में मैंने स्पेलिंग को सही किया। रेंडर, रेंडर की स्पेलिंग बता। REDER। यहाँ पे तो RED है। हाँ, तो N क्यों नहीं लगाया? तू लगा। सिर्फ इस N के चलते हुए मुझे पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से करना पड़ा, क्योंकि एरर ही नहीं सही हो रहा था। मेरी जिंदगी का स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं जाएगा। अपडेट डिस्प्ले को मैंने रेंडर चेकआउट कर दिया है और पेमेंट कर दिया है। फंक्शन अपडेट डिस्प्ले रिमूव्ड आइटम, इसको मैंने हटा दिया है बिकॉज ये अब काम का नहीं है। और ये जो डिफ़ॉल्ट निकालता था, डिफ़ॉल्ट की भी नीड नहीं, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उससे ही आ जाता है। एंड इस चीज़ को मैंने चेंज किया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड अपडेट को रेंडर में किया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड अपडेट को रेंडर कर दिया है। अब ये फंक्शन की भी नीड नहीं है एंड हमने रेंडर कर दिया है। सो यहाँ पे चेकआउट कर देते हैं। अपडेट द checkout header to MPC. Basic commit. Nice. So everything is good and clean.
कितने कमिट्स आ गए हैं? तो 1 2 3 तीन, 4 कमिट्स आ गए हैं। और 4 नहीं, तीन तीन ही कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कर रहा था? 15J कर रहा था, है ना? काफी टाइम लग गया यार 15J करने में। 15K. After deleting a product from a cart, re-render the checkout header so the cart quantity is up to date. Note, use MVC instead of updating the page directly with DOM. Use MVC of updating the page directly with DOM. वही तो मैंने किया है. So if you go there and just delete a product, ये change हो जाएगा और change होगा using render. Render से पूरा का पूरा वो page render कर रहा हूँ मैं. Everything I am rendering. So yeah, this is done also, I guess. Note, use MVC instead of updating the page. Model है हमारे पास, view and controllability. Many online stores don't deliver on the weekends. Okay. Many online stores don't deliver on the weekend. Saturday, Sunday. Okay, Saturday, Sunday. We will update our code so that delivery dates are not on weekends. Delivery dates are not on weekends. In order summary.js, we have some code at the top that takes a delivery option, calculate the delivery date, and format it. This code is repeated in delivery options HTML. Let me see. Order summary ये रहा, and ये रहा हमारे पास delivery options ID, और ये रहा हमारे पास delivery options days, जो कि मैं current day को today को फॉर्मेट कर रहा हूँ, है ना? एंड ये तो टुडे को फॉर्मेट कर रहा हूँ. इधर आओ, जिसमें मैं डिलीवरी ऑप्शंस के डेज को दे रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं, यहाँ पे ऑप्शन है आईडीज दे रहा हूँ, इट चेक्ड. तो बेसिकली अगर डिलीवरी ऑप्शंस देना है मुझे, है ना, डेटा और डिलीवरी ऑप्शंस आईडी, डेटा डेट स्ट्रिंग, यहाँ पे डेट स्ट्रिंग है. अच्छा, ये रहा डिलीवरी ऑप्शन डेज, तो यहाँ पे है ना डेज, ये रहा, क्योंकि बेसिकली डेज को ले रहा है. ओके, सो we have some code at the top that takes delivery option, calculate the delivery dates, and formats it. This code is repeated in delivery option HTML. Delivery option HTML, इसकी बात कर रही थी. ओके, हाँ. Create a function to reuse this code. Create function calculates delivery date. Create function calculate delivery date, delivery options in delivery options.js. Create a function calculate delivery dates in delivery option.js. Delivery option.js. Delivery option.js. Where is the delivery option.js? Wait a second. And this code is repeated. Create a function to reuse this code. Create a function. Import and run this function in order summary. So this is basically, it's a util, huh? Delivery option.js. भाई ये तो है ही नहीं मेरे पास delivery option.js. ये है, मैं देख नहीं पा रहा, मैं अंधा हो गया हूँ. ओ ये रहा,
है मंदा हो गया हूँ। ओके, सो किस में था? ऑर्डर, ऑर्डर सब। अरे यार क्या करते हो भाई? ऑर्डर समरी। सो ये रहा बेसिकली, तो इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन दैट वी कैन एक्सपोर्ट इट लेटर। नाम क्या रखना था? नाम रखना है कैलकुलेट डिलीवरी डेट। कैलकुलेट डिलीवरी डेट। और इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए डिलीवरी ऑप्शन। डिलीवरी ऑप्शन चाहिए, डिलीवरी ऑप्शन चाहिए। बेसिकली ये कॉस्ट पेस्ट कर दो, शिफ्ट टैब कर दो, शिफ्ट टैब कर दो, शिफ्ट टैब। व्हाट? कंट्रोल जेड। ओके नाइस। ये हमारा न्यू फंक्शन। ये चीज ऐसे क्यों है? शिफ्ट टैब, हाँ अब सही है ना? तो बेसिकली ये करता क्या है? डिलीवरी ऑप्शन से डिलीवरी डेज निकालेगा और रिटर्न कर देगा डेट, डेट स्ट्रिंग। बेसिकली ये रिटर्न कर देगा डेट स्ट्रिंग। कैलकुलेट डेट्स। तो इस चीज को डिलीवरी ऑप्शन में जाना है, ऊपर जाना है, डिलीवरी ऑप्शन। ये रहा डिलीवरी ऑप्शन, कमा डिलीवरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। ओके, इसकी जगह पे इसको लिखते हैं पहले। rather than यहाँ पर इतना बड़ा लिखने के बजाय डेट स्ट्रिंग, यहीं पे मैं कर दूँ कॉल, एंड इस फंक्शन को दे देते हैं डिलीवरी ऑप्शन। इसको चाहिए डिलीवरी ऑप्शन, इसको दे दो डिलीवरी ऑप्शन। और अगर मैंने इस चीज को बस कमेंट आउट कर दिया एंड जाके देखा तो फक अप हो गया। नाइस। रेफरेंस DJS इज नॉट डिफरेंट। हट यहाँ से। रेफरेंस DJS इज नॉट डिफाइंड। ओके, गॉट इट। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि भैया आपका जो रेफरेंस है ना, ये इसको उठाओ यहाँ से कंट्रोल एक्स, क्योंकि अब यहाँ पे तो नीड रहेगी नहीं। वैसे नीड रहेगी बट अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये आ चुके हैं। एंड इसको हटाओ यहाँ पर, एंड यहाँ पे जाओ, यहाँ पर, एंड नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। इतना भी नीचे नहीं आना था। एक ऊपर जाओ, एक ऊपर जाओ। कहाँ गए? खो गए, पता भी नहीं चल रहा। टीवी ऑप्शन HTML, यहाँ पे मैंने दोबारा यूज किया है। डाटा स्ट्रिंग कहाँ पे यूज हुआ है? यहाँ पे यूज हुआ है, इसकी जगह पे ओ ओ ओ ओ ओ ओ गलत चीज कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे करना है ये कॉपी, यहाँ पे किया ये चीज पेस्ट, इसको दिया मैंने, क्या देना है? डिलीवरी ऑप्शन, डिलीवरी ऑप्शन। इसको दे दो डिलीवरी ऑप्शन एंड इस चीज को कर दो कमेंट आउट। बेसिकली ये चीज एंड ये चीज यूज नहीं करनी है, वो चीज मैं यहाँ से यूज करवा रहा हूँ। एंड ऑर्डर समरी में जाकर एवरीथिंग इज फाइन। अरे जो डेट है ना, देख, नहीं देख, कोड का रूल नंबर 1, डोंट रिपीट योर सेल्फ। अरे तुम डायरेक्ट बताओ, मेरे को बोलने का। रूल नंबर 1 क्या कहता है? तुम डो बताओ ना। सुन तो सही, बात को मार। डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब कि अपने आप को रिपीट नहीं करना है। तब यहाँ पे देख, ये कोड देख, कॉन्स्ट टुडे न्यू डेट, डेट स्ट्रिंग ये चीज है। अब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। कॉन्स्ट टुडे न्यू डेट, डेट स्ट्रिंग सेम चीज है ना? यहाँ पर भी है, दोनों तो बंद, यहाँ पर भी है। दोनों तो बंद कर रखा है। हाँ तो भी बंद किया है ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अगर कोई भी चीज एक या दो बार आ गई, ठीक है, जैसी दूसरी बार आए
तो उस चीज को रिपीट नहीं करना है, उस चीज के लिए एक फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन क्या काम करता है देख, इधर देख फंक्शन क्या काम करता है। अब इस फोल्डर में चलते हैं। अब फंक्शन ने क्या किया, इस चीज को यहाँ पे लाया और बोल दिया कि ये फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है कि एक नाम दे देगा, ठीक है, ये नाम सिर्फ एक इत्तू सा छुटकू सा नाम दे देगा। अब बोलेगा कि जब भी तुम मेरा नाम लोगे, मैं इस पूरे कोड को फिर से चला दूंगा। तो जैसे कि हुआ क्या कि इस कोड को मुझे चलाना था यहाँ पर, तो मैंने बोला इसका नाम ले लिया। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने मेरा नाम लिया, तो मैंने इस कोड को पूरा चला दिया। अब यही चीज नीचे आ जाओ, इस कोड को मुझे यहाँ पे यहाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे चलाना था। तो मुझे इस इतने की जगह मैंने बस इतना सा नाम ले लिया और इसने ये पूरा कोड चला दिया। अब मुझे अगर दोबारा अगर यही चीज चलाना हो यहाँ पे, तो मैं फिर से सिर्फ सीधा इसका नाम। उस चीज को भी तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ तो अब देख ना, इधर देख, इधर देख, इधर आ। जी हाँ, देख रहा हूँ। इस चीज को मैंने उठाया, ठीक है, देख इस चीज को मैंने उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। कैसा दिख रहा है ये? क्या पैसा दिखा तो ये- ये भी लिखा है, ये ये दिख भी रहा है, लिखा है। दिख रहा है। अब इसी चीज को अगर मैंने हटा दिया तो देख, सिर्फ एक लाइन रह जाएगा, इतना सा पढ़ना। अब तेरे को कोई बोल दे कि 10 पेज पढ़ना है चाहे एक लाइन पढ़ना है, क्या पढ़ेगा? 10 पेज पढ़ेगा? नहीं, वैल्यू तो दोनों में बराबर ही मिलेगा। वो भी तेरे को ऐसे पढ़ के सुनाएगा, एक लाइन में भी तेरे को ऐसे पढ़ के सुनाएगा कि सुबह दिन होता है। 10 पेज में भी वही बताएगा कि सुबह सुबह सूर्योदय होने का समय जो है 5 बजे से होता है। समझ में आया? तो कोड करने का रूल नंबर 1 क्या है? फंक्शन बना लो साथ। डोंट रिपीट योर सेल्फ। वाह वाह वाह। डोंट रिपीट योर सेल्फ। खोज योर सेल्फ। और खोज। समझ गया? अब इधर देख, इस फंक्शन का फायदा क्या होता है। इधर देख, चल इधर आ, इधर आ, एक तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, इधर आ। देख मैंने यहाँ पे यूज किया है, कुछ भी उठा ले, इसको उठा ले, इसको उठा ले, इसको किसी को भी उठा ले। चल मान ले मैंने लास्ट वाले को उठाया, रेंडर डॉट पेमेंट समरी, ठीक है। अब ये देख कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे खोला, तब ये पूरा पेज का कोड, कितने पेज का है, ऑलमोस्ट 50-60 पेज का है, 60 पेज का है ना कोड। अब ये पूरा कोड सिर्फ एक लाइन मेरा रन कर दे रहा है, कर दे रहा है ना। अब इसी के बजाय मैं ये पूरा का पूरा 60 पेज यहाँ पे लिख दूं इसकी जगह, तो 120 है। अब समझ ले कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे एक बना दो, अभी तक के जितना बना है इसका पूरा एक कोड में बना दो। तो तो यहाँ पे कितना कितना पेज दिख, लाइन दिख रहा है। तो बस इसमें एक जीरो और लगा दे, क्या है? 202 के बाद एक जीरो लगा दे, कितना हो जाएगा? तो हाँ तो बस इतना ही बनेगा, क्या है? इतना लाइन बनेगा। वो नहीं बोल रहा मैं। हाँ ये अभी तक जितना कोड बना है ना, हाँ, इसको एक लाइन का कोड बना दो। पूरे को। हाँ, जैसे तो ऊपर टाइम वाले को बना दिए एक वर्ड का, उसी हम्म, तरह इसको भी पूरा एक वर्ड का बना दो। अमेज़न अच्छा इसको बना दूँ, ठीक है ले। ये पूरा कोड। चल ठीक है, तो ये जो ऑर्डर समरी है ना, ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या है इसका नाम, रेंडर ऑर्डर समरी। ले इसको भी मैंने एक पेज का बना रखा है, ये देखिए रहा। ऐसे ऐसे एक पेज का बना दो अपने पूरे मेनू को। हाँ, अब देखिए देखिए, ये जो चेकआउट डॉट जेएस है ना, ये जो है ना, अब इसको भी मैंने एक पेज का बना रखा है, वो यहाँ पर है, ये रहा। ये देखिए रहा, एक लाइन का बना रखा है। अब बोल कि ये चीज तो बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसी चीज से ये चीज क्या है, ये एचटीएमएल है। इसी चीज से ये वर्ड दिखेगा, ये रिव्यू योर ऑर्डर। ये यहाँ पे कैसे दिखेगा, जब यहाँ पे तो लिखेगा रिव्यू योर ऑर्डर। देखिए यहाँ पे बॉडी में जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ है रिव्यू योर ऑर्डर, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है रिव्यू योर ऑर्डर, कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर है, ये रहा रिव्यू योर ऑर्डर। ओए आवाज कम कर, म्यूट कर। अरे वो हो जाएगा रे, मैट्रिक्स में हो जाएगा। समझा? ये जो चीज है, ये स्केलेटन होता है कि इसके बिना
यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे रिव्यू और ऑर्डर जो है, ये चीज शो करना जरूरी है यहाँ पे, तभी होगा। तो समझ ले, इस पूरे कोड को हमने इतने में कर दिया, 60 पेज में, 60 लाइन में, इतना सब कुछ। हाँ। कुछ नहीं है, खाने को भाग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हो गया। इस चीज को मैंने वो कर दिया। अगला, बस दो और बचे हैं, 15 AM और 15N, जो कि बहुत दिमाग खराब होंगे। ओके। when when calculating the delivery date, skip all Saturdays and Sunday. Example, if today is Friday, October 5, and we choose one day delivery, the delivery date should be Monday. The delivery date should be Monday. October 8, Friday. स्किप द वीकेंड, अक्टूबर 8 और 9 को स्किप करके सीधा 10 दिखाना है। सो फाइनल 5 + 3 days, वेडनेसडे अक्टूबर, स्किप द वीकेंड। ओ, अबे तो लेकिन संडे और सैटरडे और संडे ही तो स्किप करना था। फ्राइडे को अक्टूबर 5 है, ठीक है। सैटरडे 6, संडे 7, तो मंडे को तो 8 को तो दिखाना है ना। तो यहाँ पे 5 3 8, 6 7 8, 8 को वेडनेसडे कैसे हो जाएगा भाई? एक सेकेंड। आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो इसमें +1 डे और है, बट स्टिल 5 3 8। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। ये एक दिन वाला है। अरे तो भैया, ये सीधा 10 को कैसे जाएगा? ये मिस्टेक है भाई, ये मिस्टेक है। 5 + 3 8 होता है, 8। तो 6 को सैटरडे, 7 को संडे, 8 को मंडे, 9 को ट्यूसडे, 10 को वेडनेसडे हो रहा है फिर। मंडे 1 +3 दिन, थर्सडे अक्टूबर 4, नो वीकेंड्स इन बिटवीन। फ्राइडे अक्टूबर 5 + 7, ट्यूसडे अक्टूबर 16, स्किप 2 वीकेंड्स इन। ओह माय गॉड, मेरे को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, इफ टुडे इज फ्राइडे अक्टूबर 5 एंड वी चूज वन डे डिलीवरी। ओके, वन डे डिलीवरी हम चूज करते हैं, ठीक है। अक्टूबर 5 का एंड वन डे डिलीवरी चूज करते हैं, देन द डिलीवरी डेट शुड बी मंडे। डिलीवरी डेट शुड बी मंडे, हाँ, अक्टूबर 8। सही कह रहा है। स्किप द वीकेंड, फ्राइडे अक्टूबर 5 +3 days, ये पता नहीं लाइन क्यों है, आई गेस ये लाइन नहीं होनी चाहिए, ये लाइन ही बेकार है। मंडे अक्टूबर 8, मंडे अक्टूबर 1 +3 days, मंडे अक्टूबर 1 +1 3 days, थर्सडे अक्टूबर 4, नो वीकेंड इन बिटवीन, मंडे फ्राइडे अक्टूबर 5 +7 days इक्वल, ट्यूसडे अक्टूबर 16, स्किप 2 वीकेंड्स इन बिटवीन। 5 + 7 कितने होते हैं? 12 होते हैं। बीच के वीकेंड से स्किप कर दिया, यानी कि और 2 दिन एक्स्ट्रा। ओ माय गॉड।
Oh my god. Hence, get the number of the days you need to add, use a while loop, and each time add 1 day and decrease the remaining days to add. If the date is weekend, skip decreasing the remaining days. You can use is weekend from exercise 15 to help you. Is weekend जो कि मैंने बनाया था is weekend is weekend copy utils paste it is weekend.js. अरे भाई कहाँ है परेशान हो रही हो is weekends payment summary sorry checkout sorry delivery ये चाहिए मुझे control V date if date day mm, if the date is weekend skip the decreasing and confusion है समझ नहीं आ रहा है भाई तो डे जेएस यूज ही नहीं हुआ है ना और I don't think I don't need this cause इस वीकेंड तो एक वो है ना नॉर्मली okay so is weekend return true return true return false तो बेसिकली यहाँ पे चलते हैं calculate the delivery date when calculating delivery date and skip all Saturdays and Sundays return date string today टुडे तो वहाँ पे दिखाता नहीं है यहाँ पे टुडे शो नहीं करता है ना यहाँ पे टुडे शो नहीं करता है यहाँ पे ये वाला ही सिलेक्टेड शो करता है यही चीज यहाँ पे शो करता है टुडे डेट तो कहीं नहीं शो कर रहा जो कि गुड बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता हूँ इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था बट ठीक है इफ पहले तो इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा
import is weekend from, भाई ये ले लेता है ना, ये बड़ा दिमाग खराब है क्योंकि ये ढंग की फाइल्स देता नहीं है। फ्रॉम पीछे जाना है, किधर हो डिलीवरी ऑप्शंस में, उन्हें पीछे जाओ, फिर वहाँ पे स्क्रिप्ट मिलेगा, स्क्रिप्ट में जाना है, फिर यूटिल्स में जाना है, फिर ओके ठीक है। ओके, इफ इस वीकेंड, अगर इस वीकेंड जो है ट्रू है, अगर वीकेंड जो है ट्रू है, ठीक है, अनकॉट रेफरेंस वीकेंड कैनॉट रीड वीकेंड, दो 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 uncaught type error cannot read properties of undefined reading day इस वीकेंड। तो मैंने इसको दिया है कहाँ है, टुडे। हाँ अब होगा ना, टुडे दे दिया ना। तो बेसिकली ये कंसोल डॉट लॉग, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेगा, टुडे इज वीकेंड, अगर ये ट्रू हुआ तो टुडे वीकेंड करेगा कंसोल, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। else if console.log today is not weekend, 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 बाप रे 1000 बार इसने कर दिया भाई प्रिंट। देखो, इसके लिए एक बार, इसके लिए 3 बार, तो 1 2 3 4, तो पर आइटम 4, 4 और 4 8, बट यहाँ पे तो हद से ज्यादा हो रहा है। 1 3 3 1 3, ओ माय गॉड कितना ज्यादा। हाँ भाई साहब, ओके ओके ओके। तो बेसिकली अगर टुडे वीकेंड है, अगर टुडे वीकेंड है तो मुझे जो है एक लूप चलाकर, एक लूप चलाना है, ठीक है, एक लूप चलाना है, और लूप में जितने भी डेज मिले हैं मेरे को ऐड करने को, उतने डेज में मैं ऐड करता हूँ, और अगर बीच में ऐड आता है तो उसको स्किप करके नेक्स्ट देना है। ओके, बेसिकली एक वाइल लूप चलाने के लिए देखो वो तो रहना चाहिए ना, लेट remain remaining days equal delivery option dot delivery days, ठीक है जी। while remaining days is not equal to 0, ओके, एंड लास्ट में रिमेनिंग डेज को माइनस माइनस कर देंगे। इफ इस वीकेंड को टुडे है, अगर वीकेंड है टुडे, इसको हटा दो, ये तो टेस्टिंग के लिए था बस। अगर वीक टुडे वीकेंड है, ठीक है, इफ इस वीकेंड टुडे, अगर ये ट्रू है, अगर टुडे इस वीकेंड है तो मुझे क्या करना है, प्लस कर देना है।
वेट ए सेकेंड, टुडे नहीं देना है इसमें, इसमें देना है यहाँ वाला टुडे। न्यू डेट भी ऑलरेडी है। लेट, तो नहीं इसके अंदर, तो नहीं इसके अंदर, क्योंकि कॉन्स्ट कर लो, कॉन्स्ट। बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इसको एक ऐसा डेट देना है, मतलब अगला दिन देना है बेसिकली टुडे से। You need to add, okay, get the number of days you need to add. Okay, use while loop and each time add 1 day and decrease the remaining days to odd. Add 1 day, each time add 1 day. Okay, let's create also increasing. Let day equal 1, 1 से स्टार्ट होगा बेसिकली, तो ये कहलाएगा const today day, current day, next day इक्वल जो भी टुडे रहेगा, टुडे में ऐड कर दो, कितना ऐड करना है, डे, जो भी डे है, डे। अरे डे वर्ड अच्छा नहीं है, क्या हुआ भाई? भाई वो पागल हो गया। मैं को रन करने के देखना चाहूंगा, हो भी रहा है रन या नहीं हो रहा है? हो तो रहा है, एरर भी नहीं आ रहा, अरे एरर भी नहीं आ रहा है ना इस, फिर क्या हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई होगी, कोई नहीं, लोड नहीं उठा पाया होगा। मैं कहाँ काम कर रहा था, डिलीवरी ऑप्शन में। सो बेसिकली डे 1 है आज, नेक्स्ट डे ये आ जाएगा, और टुडे के बजाय मुझे देना है नेक्स्ट डे, ठीक है, और साथ साथ में नेक्स्ट डे को मुझे इंक्रीज कर देना है, ठीक है। If the date is weekend, skip decreasing remaining days. You can use weekend from add 1 day and use a while loop. Each time add 1 day and decrease the remaining days to add. If the date is weekend, skip decreasing the remaining days. You can use weekend from exercise 15A to, अरे यार यहाँ पे डिक्रीज करने को बोल रहा है, कर सकता हूँ मैं, उल्टा भी कर सकता हूँ, बट ओके। बात है कि मुझे नेक्स्ट डे देखना है ना, नेक्स्ट डे, तो ये तो डे 1 रहेगा ऑलवेज, मुझे टुडे में एक दिन ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे देखूंगा, अगर वो इस वीकेंड है, यानी कि अगर वो
सैटरडे या संडे हुआ, ठीक है, इस वीकेंड, अगर वो सैटरडे या संडे है तो ट्रू देगा, अगर बाकी केस में फॉल्स देगा। तो अगर वो सैटरडे या संडे हुआ, अगर वो हुआ क्या बोलते हैं, अगर वो वीकेंड है तो मुझे कुछ नहीं करना है, करना है भाई, मुझे स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना है और वो करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स एक्स वी। सो बेसिकली अगर ये वीकडेज है, ठीक है, तो ये चीज़ रन होगा। अगर ये वीकेंड नहीं है तो एक दिन कम कर दो, ठीक है, एक दिन कम किया, एंड इसको इंक्रीज भी करना है, डे को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट डे नहीं भाई, डे, नेक्स्ट डे को क्यों करेंगे इंक्रीज, डे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एंड लूप अगेन चलेगा, ठीक है। क्या रिमेनिंग डेज जीरो से छोटा है, जीरो है, नो ये जीरो नहीं है, तो कोड चलेगा, ठीक है। 7 ≠ 0, क्या देगा ये, क्यों लोड में मरा पड़ा है भाई। 7 ≠ 0, yes, 7 is not equal to 0, true, this is true, nice। तो जब तक ये ट्रू रहेगा ये चलता रहेगा कोड, एंड नाउ कोड मर रहा है भाई, कोड मर रहा है, मे भी ये लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा हो। यही हो रहा होगा। ओके ओके, लेट मी सी। ओके, अगर वो वीकेंड में आता है तो दिन तो आगे जाना ही है, नेक्स्ट डे तो जाना ही जाना है ना, नेक्स्ट डे चले जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यार, इस चीज को उठाओ, कॉपी, इधर आते हैं, पेस्ट। ओह माय गॉड भाई, ये कैसे आ रखा है, लेट वाइल कांस्टेंट, थोड़ा सा ऐसे, इफ एल्स डे डे, ओके। सो बेसिकली मेरे पास जो है, थिंक ऑफ लाइक, मेरे पास इसी का एग्जांपल लेते हैं, टुडे इज अक्टूबर, टुडे इज टुडे इज October 5, ओके। सो बेसिकली अपने को चाहिए प्लस 3 दिन का लेते हैं, ठीक है, प्लस 3 दिन एटलीस्ट, और ये है फ्राइडे, ओके, ये है फ्राइडे। कोड आता है, रिमेनिंग डेज डिलीवरी, ये बोल देगा कि रिमेनिंग डेज है हमारे पास 3, तो हमारे पास रिमेनिंग डेज हो जाएंगे 3, ठीक है, डे तो 1 ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है।
वाइल वाइल में जब तक ये रिमेनिंग डेज 3 यानी कि 0 नहीं है, ठीक है, ये कोड चलेगा यानी कोड रन होगा, ठीक है। कांस्टेंट नेक्स्ट डे, एक नेक्स्ट डे बन रहा है, नेक्स्ट डेट में टुडे, टुडे क्या है यानी कि अक्टूबर 5, अक्टूबर 5 में ऐड कर दो डे, डे कितना ऐड करना है 1, यानी कि एक दिन ऐड कर दो। तो बेसिकली नेक्स्ट डे में अगले दिन का ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि फ्राइडे के बाद सैटरडे का है ना, सैटरडे का इस नेक्स्ट डे में आ चुका है, नेक्स्ट डे में सैटरडे आ चुका है। सो जब मैंने वीकेंड को बोला कि क्या ये नेक्स्ट डे सैटरडे वीकेंड्स है, तो बोलेगा हाँ वीकेंड है, ट्रू, ये जो है ट्रू है। तो ट्रू में इधर आएगा और डे को प्लस कर देगा, यानी कि डे जो है अब हमारा 2 हो चुका है, डे जो है अपना 2 बन चुका है। एल्स रन नहीं करेगा, कोड आ गया वापस, वापस जाएगा, वापस देखेगा डे रिमेनिंग अभी भी 3 ही है, एक फिर से कोड रन करेगा, कांस्टेंट नेक्स्ट डे आएगा, अब टुडे जो है 5 है ना। अब इसमें कितना ऐड करना है, डे 1 डे ऐड करना है ना। तब ये डे जो है ये 2 बन चुका था, तब यहाँ पे 2 ऐड करेगा। तो बेसिकली 5 प्लस 2 7, तो 7 को क्या होगा, 6 को सैटरडे था, 7 को संडे, 7 को संडे, ओके 7 को संडे है। तो इफ यहाँ पे चलते हैं, इफ इज दिस वीकेंड, बोलेगा 7 संडे, संडे तो भाई आपका वीकेंड है, तो ये ट्रू बोल देगा, तो अगेन वो डे बढ़ा देगा, तो डे जहाँ पे 2 था अब वो 3 बन चुका है ना। ओके, ये 3 बन चुका है, एंड ये रहा वाइल्ड रिमेनिंग, फिर से चलेगा कोड, ये देखेगा अभी भी 3 है, 3 है अभी भी स्टिल, ठीक है। कांस्टेंट नेक्स्ट डे पे जाएगा, नेक्स्ट डे अपना 3 था, तो 3 दिन और आगे देखेगा, तो 5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 8, 8 को क्या होगा, मंडे होगा 8 को है ना, 8 को जो है मंडे रहेगा, ओके। मंडे को आया, मंडे को देखा नेक्स्ट डे, ओ ये फॉल्स हो गया, ले ये तो फॉल्स हो गया, ये चीज़ तो फॉल्स हो गई, मंडे तो वीकेंड नहीं है, फॉल्स हो गई, तो ये चीज़ रहेगा नहीं, एल्स में आ जाएगा। एल्स कहता है कि बस भाई तुम डे को बढ़ा दो, तो डे हमारा कितना हो गया अब, 3 से, 3 से अब ये हो चुका है 4, और जो रिमेनिंग डेज है उसको कम कर दो, यानी कि अभी 3 से हो चुका है 2, ठीक है। वापस से कोड रहने का, रिमेनिंग डेज अभी भी 0 नहीं है, 2 है, फिर से कोड रन करो। नेक्स्ट डे कितना है भाई, 4, 4 दिन ऐड करो भाई, अक्टूबर में 4 दिन, तो मंडे ट्यूसडे को निकलेगा है ना, ट्यूसडे निकला, ये भी फॉल्स दे देगा, बोलेगा चलो भाई डे को बढ़ा दो, डे जो है अब 4 से 5 हो चुका है, ठीक है। एंड रिमेनिंग डेज जो है 1 हो चुका है, ओके। आ गया यहाँ पर, ओके, प्रिंट कर दो, ओके। दोबारा से चलते हैं, ओके रिमेनिंग डेज 1 है, ओके चल सकते हैं। चलेगा, टुडे ऐड में कितना करना है, 5 ऐड करना है ना, 5, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 अक्टूबर को है वेडनेसडे, है ना जी, 10 अक्टूबर को है वेडनेसडे, ओके वेडनेसडे आया। फिर आया कि इस वीकेंड क्या है, वीकेंड है नहीं, ये वीकेंड नहीं है, तो डे तो पड़ेगा नहीं, एंड डे तो ऑब्वियसली पढ़ना ही है। सो एल्स में जाएंगे, डे को बढ़ा देंगे, तो डे जो है 6 हो जाएगा, और रिमेनिंग डेज को घटा देंगे, तो ये जो है 0 हो जाएगा। तो जैसे ही जाएंगे वाइल रिमेनिंग, रिमेनिंग डेज जीरोस नॉट इक्वल टू 0, अरे ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये अब रन नहीं करेगा। तो हमारा जो यहाँ पे न्यू डेटा स्ट्रिंग जो है वो क्या निकलेगा, टुडे डेट का, तो रिटर्न डेट जो अपना निकलेगा वो निकलेगा ये डे वाला। तो बेसिकली जो भी डे रहेगा उसमें से 1 माइनस करके, है ना, क्योंकि वो एक डे आगे बढ़ जा रहा है, यहाँ पे तो प्लस कर दे रहा है, तो जो भी रिटर्न करेगा डे, यानी कि वाइल लूप तो खत्म, ठीक है। यहाँ पे जो रिटर्न होगा
वो होगा बेसिकली डाटा स्ट्रिंग अब रिटर्न नहीं होगा क्योंकि तो टुडे डेट है। आई मीन ओके टुडे डेट तो है ही, सॉरी सॉरी सॉरी, डाटा स्ट्रिंग ही होगा एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। एक्चुअली इस लाइन को यहाँ से हटाओ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, यहाँ पे लगाओ, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल टू दिस वन। तो बेसिकली यहाँ से एक लाइन हटा देते हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे जो है यहाँ पे एक नया कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा जो कि होगा न्यू डेट, जो कि वो भी ऑलरेडी पड़ा है। मुझे उस इसको भी हटाना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ओके, सो बेसिकली अब जब यहाँ पे डिलीवरी डेट जो डाल रहा था, जो कि यहाँ पे तो रिमेनिंग डेट में 80 सेकेंड, कुछ मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, मैं ये देखना चाहता हूँ। टुडे ये रहा, रिमेनिंग डेज ये है, गॉट इट। टुडे में मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, नाइस। और डे जो है वो छेड़ नहीं रहा, नाइस। तो बेसिकली यहाँ पे रिमेनिंग डेज दे रहा था, इसकी जगह पे बस मुझे डे -1 देना है। बेसिकली दैट्स इट, है ना। तो ये जो है डे -1 करके देगा। तो इफ आई 0 डे करूँ टुडे, एक बार मैं जाकर थोड़ा सा, नहीं यार छोड़ो, क्या ही चेक। कंट्रोल सी करता हूँ, इसी से पूछ लेता हूँ क्या देगा ये। बेसिकली 0, does it cause error? Short answer, it depends on what today is. Today is, if you're using day.js and today was created like this, today is, yeah, it is exactly like this. So this line is valid and safe, but does today is not mutated, returns a new date.js object. Today is not mutated, today is the same. Okay, okay, nice, nice, nice. तो ये जो है थोड़ा सा पागलपंती दिखा रहा है, मुझे चेक करना है क्या मेरा वेबसाइट में एरर्स हैं या फिर हक दिया वेबसाइट, है ना। चेक तो करना पड़ेगा। ओके, कोई एरर नहीं है। अब जरा देखा जाए तो यहाँ पे कोई सैटरडे और संडेज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या ऐसे ही थे, मेरे को एक बार चेक करने दो, रिफ्रेश। मैं एक बार डिलीट करके देखना चाहूँगा क्या मेरे आइटम्स डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में आ रहे हैं। ओके हाँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में आ रहे हैं, तो इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। ठीक है, रिफ्रेश, सही है सब कुछ, कोई एरर नहीं है, नाइस। सो नाउ अब हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, हाँ ये जो दिसंबर फ्राइडे दिखा रहा है, ठीक है ना। लेट मी थिंक, टुडे इज 23, तो अगर मैं 7 दिन ऐड करता हूँ, अगर एक दिन ऐड करूंगा तो 24 होगा, नो प्रॉब्लम। 3 दिन ऐड किया, 1 2 3, तो 26 होगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं 7 दिन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 30 हो रहा है, बट आंसर में आ रहा है 1। अब कैसे हो रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे गया, नो स्किप, यहाँ पे गया, नो स्किप, यहाँ पे गया, नो स्किप, यहाँ पे गया, सैटरडे, ओ सैटरडे, सैटरडे स्किप करना है, हमें आगे बढ़ना है। सैटरडे, संडे ऑल्सो स्किप करना, आगे बढ़ना। ओके 29 मंडे, ओके ये 1 2 3 4, नहीं 1 2 3, यहाँ पे आके 4
5, 6, 7. That's the exact date. 7. And it is working fine. नाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लूप में हमारा कुछ जा नहीं रहा है, हमारा लूप जो है बढ़िया से काम कर रहा है ना? एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो इस चीज को क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं, इस चीज में मैंने 2 लाइन्स एक्सपोर्ट किए हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर डेज यूज करने वाला हूँ इस वीकेंड। ऑर्डर समरी में मुझे ये यूज किया है। अच्छा, ये तो पुराना वाला था। ओके ओके ओके। और ये इस वीकेंड। ओके, सो कमिट कर देता हूँ क्योंकि अभी लास्ट वाला भी बचा ही है ये करना, वो फाइनल वाला क्या है जरा देखा जाए। 59 ऑप्शनल। ओके, ये ऑप्शनल है, वैसे मैंने कर रखा है जो भी होगा। इन एक्सरसाइज 14F to N, यानी कि हमारा पुराना एक्सरसाइज। ओके, मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। ये रहा 14F, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा एक्सरसाइज हमने कर रखा है। सो बेसिकली वी मेड द अपडेट लिंक इंटरैक्टिव। अपडेट लिंक को इंटरैक्टिव बनाया है, जो कि हमारा ऑलरेडी है। इफ यू डिडंट डू दिस, feel free to copy the solution or skip this exercise. Copy over the code for the update link into the current code. Update after updating. मैं update after पढ़ रहा हूँ. I'm idiot. Okay. That's why my ChatGPT called me idiot. Okay. So no question. After updating the quantity in the cart, instead of using the DOM to update the page directly, okay, ये करना पड़ेगा मुझे. Page directly, use MVC and re-render all the parts of the page that needs to be updated. Okay. एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो मेरे सही होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट लेट्स रीचेक इट आउट। जी, डिलीट लिंक है, ये अपडेट लिंक। सो अपडेट लिंक कितना बड़ा है? सेव लिंक। ओके, सो यहाँ पर है इतना इतना पार्ट, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पार्ट है। ओके, कर क्या रहा है देखते हैं। अपडेट लिंक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने अपडेट को उठाया है। फॉर ईच जितने भी लिंक हैं उन सब में मैंने ऐड इवेंट लिसनर डाल दिया है, क्लिक डाल दिया है। फिर मैंने प्रोडक्ट आईडी इसके डाटा से उठा लिया ताकि मैं मैच कर पाऊँ। फिर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, कार्ड आइटम, प्रोडक्ट आईडी, क्लास लिस्ट ऐड। अच्छा हाँ, मैं वो आइटम को मैंने उठाया है, ठीक है। इनपुट क्वांटिटी एलिमेंट एट इवेंट लिसनर्स। अच्छा, ये एंटर का है। ओके, ये एंटर का है ये पूरा फंक्शन। ओके, सो ये तो बस ये था कि बस मैं इस चीज़ को रेंडर कर रहा हूँ, है ना। बेसिकली क्लास लिस्ट बेसिकली ऐड कर रहा हूँ जिससे कि वो इन एंड आउट हो सके, मतलब बेसिकली विजिबल और इनविजिबल हो सके। एक्चुअली यहाँ पर है कि सेव लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे एड इवेंट लिसनर्स हैं, जैसे ही क्लिक होगा ये चीज़ें, ये तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कांस्टेंट यहाँ पे मेन चीज़ जो अपडेट करनी है चीज़ें मुझे, अपडेट क्वांटिटी जो कि मैं इससे कर रहा हूँ, रेंडर पेमेंट यहाँ से भी मैं रेंडर कर रहा हूँ, रेंडर चेकआउट हेडर भी मैं रेंडर कर रहा हूँ, अपडेट डिस्प्ले क्वांटिटी, डिस्प्ले क्वांटिटी ये चीज़ क्या करता है, न्यू क्वांटिटी। got it। So basically ये जो है अगर मैं इधर आता हूँ, पेज का है मेरा ये रहा पेज, तो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ और ये जो मैं करता हूँ, जैसे कि मैंने 23 टाइप किया
तो ये वाला जो डिस्प्ले है ये अपडेट कर रहा है बेसिकली। अंडरस्टैंड? ओके। तो बेसिकली मैं री रेंडर तो कर ही रहा हूँ ऑल जगह पे, ये सारे रेंडर्स ही कर रहा हूँ। ये तो दोनों चीजें रेंडर कर रहा हूँ, बाकी उसको कैसे करूँगा, वो तो इनसाइड है इसके रेंडर। ठीक है, कर सकता हूँ अपडेट क्वांटिटी। ये कहाँ पर है अपडेट क्वांटिटी? अच्छा, ये डिस्प्ले क्वांटिटी है। ओह, ये डिस्प्ले क्वांटिटी है। ओह, मैं इसको हटा सकता हूँ आई गेस। अपडेट डिस्प्ले क्वांटिटी, इसमें भी डिस्प्ले ही कर रहा हूँ। अपडेट लिंक, अच्छा लिंक ही है ना। ओके 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 ओके। मैं यहाँ पे रेंडर कर सकता हूँ, रेंडर ऑर्डर समरी, बेसिकली ये यूज कर सकता हूँ। ट्राई कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ हटाऊंगा नहीं। यहाँ पे गया, इस चीज़ को कमेंट आउट किया, ठीक है, एंड इसकी जगह पे मैंने एंटर कर दिया ये। यहाँ पे गया, इसको किया, एंटर कर दिया ये। ठीक है, चलते हैं, लेट्स सी। थोड़ा सा आई मीन कंसोल में कोई दिक्कत नहीं है, तो हटा ही देते हैं ना। सो अगर मैं कोई चीज़ अपडेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल नीचे वाले को अपडेट करता हूँ 45, या वर्किंग ब्रो, लेट्स सी 12, वर्किंग, इसको करते हैं 2, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, एंटर भी काम कर रहा है, सेव भी देख लेते हैं, 12 सेव, ये भी काम कर रहा है। वर्किंग वर्किंग वर्किंग। सो आई कैन रिमूव दिस फंक्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा फंक्शंस की नीड नहीं है, जो कि ये था, है ना। तो इस फंक्शन की अब नीड नहीं है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा पेज ही वो कर दे रहा हूँ, रेंडर। ओके, ये अपडेट क्वांटिटी तो इधर होगा, कार्ट में होगा, कार्ट का है अपडेट क्वांटिटी, ये रहा, जो कि कार्ट में अपडेट कर रहा है बेसिकली। सो ये तो कार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये बैकएंड है बेसिक, आई मीन बैकएंड कह रहा हूँ, डाटा है बेसिकली, जो कि हमारा डाटा में सेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से मैंने रेंडर कर दिया। तो जा ले आ, मुझसे क्या पूछ रहा है? और क्या करना था? एक और चीज़ मुझे करनी थी। ओके हाँ, मैंने सारे एमबी तो कर दिए, ठीक है, जितने भी है रेंडर मेरे सारे के सारे रेंडर हो रहा है। मेरा ऑर्डर समरी रेंडर हो रहा है, हेडर भी रेंडर कर रहा हूँ, और पेमेंट भी रेंडर कर रहा हूँ। यहाँ पे तीनों चीज़ें मैं रेंडर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो बेसिकली मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, कि जैसे ही मैं एंटर, ये जो है ना मेरा एंटर सेक्शन, ये चीज़ मैं खुद से ऐड करना चाहूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, क्योंकि सब चीज़ वर्क कर रहा है। एक बार कंसोल देख लेते हैं, कोई एरर नहीं आना चाहिए यार। ओके, कोई कोई एरर नहीं है। सो बेसिकली मैं इस चीज़ को डन कर सकता हूँ। कुछ भी ले जो गर्म होगा जा। लेट्स कंप्लीटेड द एक्स, नहीं, जा लेके जा फोन, वहाँ पे ले लियो, फिर वहीं पे कर दियो जा। हाँ, तो जा वहीं पे, जा वहीं पे कर दियो जा। एक्सरसाइज 15, कंप्लीट द एक्सरसाइज 15, या डन 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 कमिट, या यही ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पे मैंने, अच्छा ये हटाया था अभी मैंने, जो रिपीटेशन था, प्लस ये मैंने अभी रेंडर लगा दिया, जो कि या एंड ये रहा वीकेंड। ओके, कंप्लीटेड, लेट्स गो। सो हमारा एक और हो चुका है फाइल, एंड नाउ मुझे जो है ऑर्डर समरी में जाना है, एंटर सेक्शन ये रहा। बेसिकली मैं ये करना चाहता हूँ कि जब भी मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ ना, टाइपिंग का जाता है, और मोस्ट बंदे लाइक स्टार्टेड टाइपिंग। ओके, तो बेसिकली ये हाईलाइट नहीं होता है। ये चीज़ मुझे देखना है कि अगर मैंने किसी बटन पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ये हाईलाइट हो जाता है कि बंदे स्टार्ट टाइपिंग। गॉट इट? सो लेट्स, सबसे पहले तो इसी से पूछ लेता हूँ, अगर ये बताता है तो। आई हैव टू टैग, वन इज input and other is text,
that have um, event of click. When I click, नहीं 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 that has क्यों मैंने हटाया क्यों click when I click the input get get visible slash appear on page page. So I want is when the button is clicked, the input field is high highlighted means ready to type. Don't have to click on input and then start typing. Maybe he understand garage hai. What you want is focus. For the next, and the next, when the text or button is clicked and the input becomes visible, you just need to programmatically focus on the input so the cursor is already there and you can start typing immediately. The key method focus. ID okay ये ID है ये input ले लिया उसने ID लिया no problem constant ये button input okay so button dot add event listener okay so input dot focus input dot focus input जो है focus हो जाए cursor appear ready to type input dot focus okay okay कौन है यार ये बच्चे इनपुट है कहाँ पे मेरा एक सेकेंड डिलीवरी का काम नहीं है अभी हटा दो ऑर्डर समरी ये भी हटा दो पेमेंट समरी भी नहीं काम नहीं है चेकआउट रहने दो चेकआउट ये भी रहने दो इस वीकेंड हटा दो इसको हटा दो यहीं पे होगा आई गेस मेरा इनपुट क्योंकि मैंने यहीं पे इनपुट लिया हुआ इनपुट ये रहा यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे यार मैं पेज पे ही खोज लेता हूँ मुझे नहीं मिल रहा बेसिकली इसका क्लिक करो कंट्रोल ए एंड डिलीटेड ये कहाँ पर है what the hell is this input quantity input quantity okay input quantity input quantity okay cost dot input cost input quantity dot element एक ही है पहले का है मैचिंग कार्ट आइटम डॉट आईडी ओ यही तो है एंड इसके अंदर है स्पैन एक लिंक ओके ये रहा ओके आई फाउंड इट तो इसमें
rather than मैं इसमें खोज रहा हूँ। हम्म, अच्छा, ये तो डिलीवरी ऑप्शन है। अरे यार, मैं क्या ही देख रहा हूँ। सो ये यहाँ पर है इनपुट, एंड इनपुट में मुझे जो है, जब भी ये बटन, पहले तो इसका वो ले लिया जाए, कॉपी। ये चीज़ स्टाइल था ना, लेकिन ये जिस तरीके से इसने यूज किया है, ये देख के तो लग रहा है कि टोटली जेएस है ना। इनपुट के अंदर इसने इनपुट ले लिया है, फिर इनपुट डॉट फोकस कर दिया है। ओके ओके, सो अपना एंटर ये रहा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कार्ट, ये तो कार्ट सेलेक्टर है। इनपुट ये रहा, इनपुट सेलेक्टर यहाँ पर है, तो इसको इनपुट डॉट क्वांटिटी है, इसके लिए ये चाहिए मुझे। जब भी एंटर की क्लिक हो, है ना, नहीं एंटर पे क्लिक नहीं करना है मुझे, सबसे पहले अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करते ही ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, डॉट फोकस ये हो जाए हैं। दैट्स इट, लेट्स चेक इट आउट। कोई एरर, कोई एरर, कोई एरर नहीं। ओके, आहा, वर्किंग। ये देख, पहले क्या होता था, इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना होता था ना। अब देख, अब इस पे क्लिक किया एंड स्टार्ट टाइपिंग। अभी एक और चीज करना है, अब जैसे देख, ओए मेरा, अब इधर देख, एक और चीज, एक और प्रॉब्लम देख यहाँ पे। मैंने यहाँ पे टाइप किया, अब कोई कोई बकवास इंसान आया, उसने भर भर के नंबर टाइप कर दिया, ठीक है, तो होगा ही नहीं। लेकिन जब दोबारा क्लिक करने जाएगा तो वो नंबर स्टिल वहां पे रहता है। नहीं अच्छा है, वो खाली हो जाना चाहिए नंबर। तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि जब क्लिक होता है, ठीक है, आइदर सेव और, ये तो अपडेट लिंक है, ठीक है, अगर वो सेव हो जाता है तो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ क्वांटिटी, एंड लास्ट में, ठीक है, लास्ट में इनपुट डॉट क्वांटिटी डॉट वैल्यू इक्वल खाली कर दो। सो बेसिकली ये क्या करेगा, खाली कर देगा। अगर एंटर क्लिक हुआ, सब कुछ डाटा अपडेट, क्वांटिटी क्वांटिटी अपडेट हो गया, रेंडर हो गया, सब कुछ हो जाने के बाद ये खाली कर देंगे। ओके, यही सेम चीज मुझे यहाँ पर भी करना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद खाली कर देना है। क्लिक, लास्ट में क्लिक हो जाने के बाद खाली कर देना है। इनपुट वैल्यू, ओके लेट्स सी, कोई एरर नहीं है, नाइस। रिफ्रेश कर लेते हैं, नाइस। ओके, मैं अपडेट पे गया, मैंने यहाँ पे भर भर के नंबर डाल दिया, ठीक है। ओए, ये देख, मैंने भर भर के नंबर डाल दिया, इतने की क्वांटिटी भी नहीं है, ठीक है। मैं गया सेव पे, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैंने, है, नहीं रहेगा ना, अब नया खाली। हाँ, 102। अच्छा, टू, हाँ टू, सेव। हम्म, कुछ नहीं आएगा, उतना बड़ा नंबर नहीं जाएगा ना। अब वापस क्लिक करेगा तो सारे के सारे नंबर गायब। पहले क्या होता था कि वो सारे नंबर रहते थे, देख, पहले जाएगा तो पहले क्या था सीन, कि जब यहाँ पे तू गया, ऐसे ऐसे हजार नंबर डाल दिया,
सेव किया कुछ नहीं होगा वैसे तो, बट लेकिन वापस क्लिक करेगा तो सारे के सारे नंबर स्टिल रहते थे, तो तुझे ऐसे बैक करके हटाना पड़ेगा। नहीं अच्छा है ना। अब यहाँ पे तो कितना भी नंबर टाइप कर ले, सेव कर दे, एंड देन वापस आके अपडेट करोगे तो नया नंबर आ जाएगा, जो कि नाइस। यहाँ पे तू मैक्सिमम नंबर डाल सकता है 999, ये मैक्स नंबर डाल सकता है। इससे एक ऊपर जाते ही नहीं लेगा, कैसे नहीं लेगा देख, 1 1 2 3, 0 0 लेगा ही नहीं। देख रहा है, मैक्स क्वांटिटी इतना ही जा सकता है। नाइन नाइन देख जैसे 1000 डालेगा, वन टू मेरे थ्री हिसाब से डालो साइड में प्लस वन प्लस माइनस वन का। है तो सही। प्लस वन प्लस माइनस वन का। क्यों? जब तेरे को फुल्ली खुद से मैनुअली अपडेट करने को मिल रहा है तो प्लस मेरे वन को से क्या करेगा? बताना है तो बस कोई को नहीं करते। ओके, एंटर के साथ भी देख लेते हैं। एंटर। ओके नाइस। और rather देन मैंने इसको 2 बार लिखा है, मैं ये चीज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहले मैंने वो नहीं किया है ना, मैंने एलिमेंट ही यहाँ पे लिया है, पहले स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। छोड़ो, सही है। 2 ही बार तो यूज किया, ज्यादा तो यूज में नहीं किया। ओके, सब कुछ सही चल रहा है भाई, सब कुछ सही चल रहा है। सो ये एक्सरसाइज भी डन। आगे बढ़ेंगे अब कल। चलते हैं, इसको कर देते हैं पुश। वेट अ सेकंड, मैं ये भी कर सकता हूँ। फोकस कहाँ है? फोकस के जस्ट नीचे ही डाल दो। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और यहाँ से मैं हटा सकता हूँ। वैल्यू खाली करते फिर फोकस करते। अगर मैं चेक करने जाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपडेट 23 to 34, अपडेट नाइस। सेव करके दोबारा जाऊंगा, कभी भी जाओ वो हमेशा खाली मिलेगा। ओके, ये कमिट चल। अरे 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 अरे, रुक जा भाई, पहले देखने तो दे। दिस इज बेसिकली, अच्छा ये लाइन है इसमें, तो बेसिकली अब बस ये रहेगा, ओनली दिस फाइल। ओके, let's commit, um, completed the focus on input of quantity. So now मेरे पास इतने सारे आ चुके हैं। कितने रह रहे हैं? 5 कमिट्स हैं। नाइस। दिस इज द एंड। मैं जा रहा। बाय बाय।
ये बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ।